Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. Today we will discuss types of respiration. Then we will start respiration in plants. Before going to discuss that topic, I would like to tell you about our PA1 exam. In your PA1 exam, questions will be asked from this chapter only, and mainly up to nutrition in human beings. Means nutrition in plants, and nutrition in animals, and nutrition in human being. These topics are covered in your PA1 exam. In case of biology, as this is not a biology paper, the paper will be your science paper. Clear? In that, physics, chemistry and biology, all three will be asked. In my subject biology, the questions of about 14 marks, मीन्स 14 नंबर के आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, एंड 13 मार्क्स के आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होंगे. तो 13, 26 एंड 14, 40 मार्क्स के टोटल 40 मार्क्स के आपके पेपर होंगे. क्लियर? इन माय सब्जेक्ट 14 मार्क्स, 6 क्वेश्चंस आर 1 मार्क्स MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्लियर? एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. 6 हो गए आपके 1 मार्क्स के, 1 हो गया 3 मार्क्स का, एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का. क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 6 + 3 9 एंड +5, टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे. आज सिलेबस हमने क्या बताया, कहाँ तक हम कवर किए हैं क्वेश्चन पेपर में, दैट इज़ अप टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर? फर्स्ट न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर? टोटल आपके कितने मार्क्स होंगे? 40 मार्क्स के. उसमें से बायोलॉजी कितना? 14 मार्क्स का, फिजिक्स 13 मार्क्स के, एंड केमिस्ट्री 13 मार्क्स के. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, एज वी आर डिस्कसिंग respiration. नाउ टाइप ऑफ respiration. Depending on use of oxygen, respiration is of 2 types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in presence of oxygen. During this process, glucose is completely oxidized into carbon dioxide and water, and energy is released. Clear? Next one, that is anaerobic respiration. Anaerobic, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनारोबिक जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन. क्लियर? एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. In this case, glucose is incompletely broken down into alcohol and carbon dioxide or into lactic acid. Thus energy released
in anaerobic respiration is much less than in aerobic respiration because alcohol still contains great deal of energy which remains unutilized। मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो है एनर्जी कम रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में आपका टोटल एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद 38 ATP मिलता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ओनली 2 ATP वी आर गेटिंग। एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, certain bacteria and fungi respires only anaerobically. In them, it is called fermentation. Fermentation is defined as the anaerobic breakdown of carbohydrates into alcohol or organic acids. Listen carefully. This question will be frequently asked in your exams. Fermentation is defined as the anaerobic breakdown of carbohydrates into alcohol or organic acids. Fruits and seeds also have anaerobic respiration. In case of animals, gut parasites like tapeworm and ascaris have anaerobic respiration. Skeletal muscles also depends temporarily on anaerobic respiration during prolonged physical exercise. When oxygen supplies to the muscles proves to be insufficient. In animals, during anaerobic respiration, carbon dioxide is not formed. Instead of ethyl alcohol, lactic acid is produced in muscles. Clear? Now difference between anaerobic respiration in animal and plants. एनिमल और प्लांट में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होते हैं? इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का डिफरेंस है किसमें? एनिमल एंड प्लांट में। एनिमल के केस में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, वाइल इन केस ऑफ प्लांट्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट, इन एनिमल्स CO2 is not formed. In case of plants, CO2 is produced. Third point, in case of animals, heat released is less. In case of animals, heat released is less. Heat released is more in case of plants. Fourth point, foaming does not occur. Fourth point, in case of plants, CO2 release products foaming. Foaming means foam फॉर्म करना, means झाग बनाना। Difference between aerobic and anaerobic respiration. What is difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? Aerobic respiration, first point, occurs in presence of oxygen. In case of anaerobic, occurs in absence of oxygen. Second point, glycolysis takes place in cytoplasm and Krebs cycle in mitochondria. In case of anaerobic respiration, second point, complete process of respiration takes place in cell cytoplasm. Third point, complete oxidation of food takes place in case of aerobic respiration. In case of anaerobic respiration, third point, incomplete oxidation of food takes place. मीन्स जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है इन केस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। फोर्थ पॉइंट,
38 ATP are produced from one molecule of glucose. In case of anaerobic respiration, only 2 ATP are produced from one glucose molecule. Fifth point, end product are CO2 and H2O in case of aerobic respiration. In case of anaerobic respiration, end products are ethyl alcohol and CO2 or lactic acid. Sixth point, it occurs in majority of plants and animals. Aerobic respiration. Sixth point of anaerobic respiration, it occurs in few organisms like yeast, bacteria and some parasitic worms. This is about types of respiration. We will discuss respiration in plants in our next lecture. Okay, thank you.